Assalamu alaikum my dear students, how are you all? Hope that you all are fine and safe at your home. Today is 27th of April 2021. Day is Tuesday and you all are having your science lesson with me. Can you tell me the name of the chapter that we are discussing these days? Well done. It's about unit number 1, the human body. And what about the topic that we are going to start today? Excellent. It's about the digestive system. But before we talk more about the digestive system, let us all revise that what were our previous topic in our science lesson. So the topic that we have studied in our previous lesson of science was about the skeletal system. And in skeletal system we have studied that it is made of what? It is made of bones. Very good, Khansa. The skeletal system is basically made of skeleton, and you all know that skeleton is made of bones. There are different types of bones present in our body. Collectively in the human body we are having 206 bones in an adult human being and 300 bones in a young baby. Okay? And then we have also studied that there are some joints that are present in our different location of the human body. There are some joints that are present on the shoulders. There are some joints that are present in our knees. We have named them that the joints that are present in our shoulder, we call them ball and socket joint, and the other one that are present in our knees, they are called hinge joint. Also we have discussed that our head is, when we feel it, we touch it, it feels hard. Why is that? Because it is protected by the skull, and skull is made of bones. So most of our body parts are made of bones, and bones collectively made the skeleton, and skeleton is ultimately providing us the support, protection to our body, and it also helps to. In our today's science lesson, we will be talking about the digestive system. You have already studied it in class 4 about the digestive system, in which we have talked about the digestion process. Let us just revise it once again and learn it in more detail. So before I tell you the mechanism of the digestion, let us just clear what actually the digestive system is all about. Your digestive system is related to your stomach, and there are some other organs. This is how our stomach look like, और जो digestion का process होता है वो इस organ में होता है. Now what actually digestion is? It is the breaking of large food particles into the smallest one. जब आप कोई भी चीज़ खाते हो तो उसको लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज करना एंड एक्सट्रैक्ट द गुड मटेरियल एंड जस्ट थ्रो द वेस्ट मटेरियल आउटसाइड आवर बॉडी. जो सारा वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है. दिस इज व्हाट एक्चुअली द डाइजेशन डू इन आवर बॉडी. टू दिस इज द डायग्राम ऑफ द whole organs that are involved in digestion. It starts with our mouth. हमारे mouth से start होती है, और फिर जो food canal होती है, food pipe होता है, जिससे ये जो food है हमारे stomach के अंदर आता है, इस पूरे part को हम esophagus कहते हैं. What we call it? Esophagus. Esophagus is the food pipe. Let me write it here. Initially the digestion will be starting from the mouth. आप कोई भी चीज़ खाते हो अपने मुंह में डालते हो, और आपके teeth और आपकी tongue help you to break those food particles. आपके teeth आपको help करते हैं उसको break करने में small pieces में, और आपकी tongue आपको help करती है to swallow that food. आप उसको निगलने के लिए आपकी tongue push करती है food को अंदर जाने के लिए. Okay, one thing. Then जो भी आपने food खाई है वो आपके stomach में जिस फूड पाइप के थ्रू जाती है, उसको बायोलॉजी में या फिर साइंटिफिक टर्म में वी यूज द वर्ड एसोफेगस फॉर दैट.
O is silent and you will be pronouncing it esophagus. Okay, this is the word, and in common language we call it food pipe. Through the food pipe, whatever you have eaten, it will come down. Let's suppose you have eaten something and it's coming through the food pipe here into where? Stomach. This is the stomach, and I have already shown you how does it look like. When the food is reached in the stomach, there are some enzymes that are present in our stomach, like pepsin, that produce a kind of acid. What that acid will do? वो फूड को मॉइस्ट करता है, उसको थोड़ा सा गीला करता है ताकि वो डाइजेस्ट अच्छे तरीके से हो जाए. सारी डाइजेशन यहाँ पे स्टमक में होती है और स्टमक के बाद यहाँ पर जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में. Remember we have studied, we are having two types of intestine in our body. The one that is larger inside and outside the body, we call it large intestine, and the one that is small inside and present inside the large intestine is called small intestine. ये जो अंदर है, this is what we call small intestine. इसको हम small intestine कहते हैं. सबसे पहले जो फूड स्टमक में डाइजेस्ट हुई है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? इट हैज़ टू टेक आउट ऑल द गुड मटेरियल फ्रॉम द फूड. हमारी फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स और अच्छी चीज़ें होती हैं वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके उसको ब्लड में ऐड कर देता है. ओके, यहाँ देखें साइड पे लिवर है, लिवर में जाएगा, वो लिवर का काम है ब्लड बनाना, वो लिवर में चले जाएगा सब गुड मटेरियल, और जो बैड स्टफ है जिसकी हमारी बॉडी में कोई भी नीड नहीं है, दैट इज़ अ वेस्ट मटेरियल एंड हैविंग नो यूज़ इन आवर बॉडी, दैट विल गो आउटसाइड आवर बॉडी. First it will go to the large intestine and then it will go outside to our body through the point anus. Anus से वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है. ठीक है. So what you have to keep in your mind that these are the organs that are involved in digestion: your mouth, esophagus, stomach, liver, large intestine. Okay, class 5, you have seen the diagrams that I have made on the board. Now just let us understand it with the help of a model. This is the model of the human body. You have already seen it many times. Now I will tell you like how the digestion actually happen in your body. This is the mouth of the model, जिसमें से आप कोई भी चीज़ खाकर अंदर लेके जाते हो. And see this one that is in the light green color, that is the food pipe, जिसको हम esophagus कहते हैं. Okay, once you have eaten anything, it will come down through the esophagus and it will reach to the stomach. This is how the stomach look like. यहाँ पे ये होता है, स्टमक के साथ लिंक्ड होगा, फिर हमारे वेट अ सेकेंड, दिस इज हाउ इट इज़ लिंक्ड. स्टमक के अंदर जाएगा फूड मटेरियल, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फ्रॉम वेयर द गुड पार्टिकल, द गुड थिंग्स दैट आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बॉडी, इट विल बी एक्सट्रैक्टेड and all the waste material will go to the large intestine, and from the large intestine it will go outside our body. So this is what the digestion mechanism. One other thing that we have studied today is about the urinary system. If I remove the intestine, you will be able to see it clearly. These are the pair of the kidneys we are having in our body, and this line that is slight pink in color, it is called ureter. इसको हम ureter कहते हैं. ओके, और ये पॉइंट इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, जहाँ से ब्लड, नॉट ब्लड, जहाँ से जो वेस्ट वाटर है, यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलता है. ठीक है, और जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है उस पॉइंट को हम ब्लैडर कहते हैं, और ये सारा सिस्टम मिलकर वो बनाता है, यूरिनरी सिस्टम बनाता है. ठीक है. So urinary system is composed of kidneys, ureter, bladder and urethra, the point from which the waste is going outside the body. So this was the urinary system, and if I joint all the things together, give me few seconds to do that. Okay, this is the intestine. Here we are having the stomach,
This is the liver that helps to make the blood, and then I'm going to keep the lungs on their position. But before lungs, we have to keep the heart. This is the location of the heart, lungs, and the whole system is all packed again. This one is what we call the esophagus, the food pipe from which the food is going inside our body. So I hope the concepts are clear to you. I will make this video once again to explain to you, to let you know about the mechanism in more detail. अभी आपने वीडियो देखने के बाद अपनी बुक की रीडिंग करनी है, पेज नंबर 15 की. दिस इज पेज नंबर 15. In this page they are explaining you the whole process of the digestion that I have explained to you. Few things they have written in the book that are our small intestine is about 5 meter. This is the small intestine and they are telling you it is 5 meter long. अगर हम इसको यहाँ से बाहर निकालें, ओपन करें तो it will be 5 meter long. And about the esophagus they are telling in adults, जो यंग पीपल होते हैं उनमें ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, क्योंकि हमारे नेक से लेकर हमारे स्टमक तक जाकर स्टॉप करता है. ठीक है. Once you have done the reading of both the topic urinary system and digestive system, there are some questions given on page number 16, like what is the function of the digestive system. So you will be writing the answer of this question. This is the first question. What is the function of the digestive system? You will be writing the answer from this page. The digestive system involves taking in food, extracting the goodness from that food and getting rid of the waste. यहाँ तक आपने करना है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का. You are also supposed to draw this diagram of digestive system and label it as well. Then we are having another question. What is meant by the digestive tract? Digestive tract किसे कहते हैं and how long it is? So you will get the answer of this question from the digestive tract is like a long tube known as digestive tract. In adult it is about 8 meter long. यहाँ पे ये 8 meter long होता है. ठीक है. The digestive tract. So this will be the answer of question number 2. I am writing it here. Answer of question number 2. This was the answer of question number 1 and this is the answer of question number 2. Okay, now they have given one more question. How long does your food stay in your small intestine? It stay in our small intestine for about, you will get the answer from this page. After reading it, it stay for the 3 hours. So you just have to keep the answer on the book. इसको कॉपी पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. I am making a start that you are not supposed to do it on the notebook. What are gastric juice and what do they do? Gastric juice are present in your stomach and they helps in digestion, making the food more moist. Food को moist करने में help out करते हैं. So you just have to keep the concept in your mind. There is no need to do this question on the notebook. ये question हम notebook पे नहीं करेंगे. ठीक है. उसके बाद आपने यूरिनरी सिस्टम की सिर्फ और सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करनी है. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं करने. ओके. वी आर डन विद चैप्टर नंबर 1. We have done a lot of questions related to the different topics and still there are some questions that they have given on the exercise. Let me just read it and I'll tell you that which question you are supposed to do and which of one you don't have to do it. Draw the picture of yourself showing the position of your kidney, lungs, heart, stomach and liver. They are asking you कि आपने अपने आप को इमेजिन करना है और आपने अपनी डायग्राम ड्रॉ करनी है कि आपके लंग्स, किडनी, हार्ट जो है वो कैसे प्लेस्ड हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम यू कैन ड्रॉ. आप इसको नोट कर लो और आप बिल्कुल एज इट इज़ अपनी रीडिंग बुक पे ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. सो यू आर डन विद दिस क्वेश्चन. दिस यू हैव टू डू इन द बुक. Now let's see the second question. What is the function of the following? Veins, capillaries, arteries. We have already done on the notebook. Alveoli, saliva, ureter. ये आपने नहीं करना. ठीक है. 1, 2, 3 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आपने जब हार्ट के बारे में पढ़ा था तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द ब्लड वेसल, जिसमें हम ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं. ठीक है. वेन, कैपिलरीज और आर्टरीज आप करोगे. एल्वोलाई, सलाइवा और यूरेटर नहीं करना. इसका जस्ट कॉन्सेप्ट रखना है.
स्लाइवा हम कहते हैं जो हमारे मुंह में जो लिक्विड होता है, जो थूक होता है, उसको कहते हैं। एल्वियोलाई वो होते हैं जो लंग्स को, उसके साइज को एक्सपैंड करने में हेल्प आउट करते हैं। और यूरेटर ये होता है, दिस वन इज़ कॉल्ड द यूरेटर, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, दिस वन इज़ कॉल्ड यूरेटर। सो जस्ट कीप द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, डोंट डू दिस क्वेश्चन ऑन द नोटबुक। हाउ डज द नर्वस सिस्टम वर्क? वी हैव ऑलरेडी डन इट, वी आर नॉट गोइंग टू डू इट अगेन। हाउ डज द हार्ट फंक्शन? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सिंपल डायग्राम। आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया हुआ है, जिसमें हमने बताया था कि देर आर डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। आप सिर्फ इसमें ये बताओगे, डायग्राम्स करोगे, फर्स्ट नहीं करेंगे हम। What is the importance of respiratory system? Not going to do it. What are muscles? No, we don't have to do it on the notebook. What is the skeleton and what does it do? No, this we have already done. About the types of joints. How does the digestive system process? ये भी आज हमने कर लिया है. What makes up the urinary system? आपने बताना है कि यूरिनरी सिस्टम को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. सो यू नीड किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. सो दिस विल बी द आंसर. दिस डायग्राम विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. हाउ डज दिस सिस्टम वर्क? व्हाट आर पार्ट्स प्ले? आपने सिर्फ इसको यहाँ तक करना है, नीचे वाला क्रॉस सिर्फ यहाँ तक. ओके, जिसको भी मैंने बॉक्स में कर दिया है. व्हाट मेक्स अप द यूरिनरी सिस्टम, सिर्फ ये करना है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी आर नॉट गोइंग टू डू, ये नहीं करना. ठीक है. एंड वी आर फाइनली डन विद चैप्टर नंबर 1. इट वॉज अ huge chapter and there were so many questions in it, but we are done with each and every question and each and every concept. After doing the work, written work, you have to submit it in the Google Classroom, as you already know about it. This is the diagram of the heart that you are supposed to draw. The diagrams that are given in chapter number 1 all are very important, because in your exams you will be giving a diagram and you will be asked to label those diagrams. तो आपको कोई भी diagram मिस नहीं करनी है. अपनी नीट नोटबुक पर आपने टॉपिक देना है. लेट्स सपोज मस्कुलर सिस्टम, ये ड्रॉ करें, उसको लेबल करें और आपको उसकी लेबलिंग आनी चाहिए. आई हैव ऑल्सो गिवन यू असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक ऑन द गूगल क्लासरूम, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम and you have to practice to how to label it. So this is all about the chapter number 1. We have completed it, and next in your class we will be continuing with the chapter number 2, that is about the animal world. So take good care of yourself, have a good time. See you in the next video with a new concept.